Good afternoon, one and all. Welcome to the inaugural ceremony of the National Family Medicine Day. 27th September 2010. That was when the AFPI was founded. Since then, it has grown over the last 12 years, having member representation in all states of India, with 16 state chapters, and they are conducting various academic and social activities aimed at promotion of family medicine. The first National Conference of Family Medicine was conducted in Delhi in April 2013. The National Family Medicine Day is being observed on the 27th of September 2022 to commemorate the Foundation Day of the Academy of Family Physicians of India. Founded in the year 2010, AFPI is an academic association representing the postgraduate trained family medicine specialists in India. This is promoting and training the education of primary care physicians. AFPI functions as an educational and a professional forum catering to the academic needs of a wide range of primary care providers. Dr. Raman, he is the National President of AFPI. Sir, can I please welcome you on the dais? Chief guest, please. So I request all the esteemed guests to come up for the lamp lighting, please. Om Vakratunda Mahakarya Suryakote Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvana Good morning, delegates, participants, guest faculty, our dear colleagues. First of all, on this stage, let us first of all celebrate the women leaders of our country in our profession. You see Professor Surekha Kishore as one of the leading public health professional, director of a National Institute of Importance, Professor Sunila Garg, Dr. Sanghmitra Pati. These all are our leaders, and I welcome all women. I celebrate all women in this hall, and we understand that they are the one who are, who represent our true spirit of our country, of nation, and the moment, the journey we are going to take in future. And all of you are respected dignitaries for this conference. We invited Professor Surekha Kishore as chief guest, and she kindly consented for this, very important consultation, talking about medical education reforms, integrating family medicine into the MBBS curriculum. Professor Sunila Garg, who is one of the senior most professionals, probably she is the senior most in this hall. She's teachers to many generations of doctors, many of us for HIV, geriatrics. Dr. Sanghmitra Pati, she has been with us, family medicine movement. No, she is in ICMR, she's a scientist. But she came to our 2013 conference, 2015. She has been to all our conferences. In one of our conferences, I remember she, flew twice from Bhubaneswar. It was a 3-4 day event. And she flew twice. So this is her commitment, and she has written several papers on family medicine. She has done many researches which is pertinent to the development of family physicians' role in the health system. And I also welcome Sri Alok Saxena ji, respected Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, all our dignitaries, guests of honor,
He's also director of Central Government Health Scheme and director of NOCO. Very important position within the government and government of India. We all understand India is a big country of 1.3 billion, huge challenges, huge disparities. Last 75 years, this year we are in the 75th year. Azadi Ka Amrit Mahotsav is being celebrated across India, and as healthcare professional, we also have to be part of this government's initiative on all spectrums, all sectors, including health sectors, and we support government's all initiatives, on programs. We have tried to be part of as healthcare professional, frontline workers of the COVID pandemic, and it's not just us, but everybody has been on the toes during the pandemic, and thankfully, all of here, we have lost many our near and dear ones, friends, neighborhood. We had losses, but thankfully, we have come out of that situation because of the massive public health efforts. So I was not very fan of the public health system of India, but after this COVID pandemic, I have realized that India has the capacity. I'm talking about the institutional capacity. If you look at COVID vaccination program, if you look at how we addressed this huge challenge, which everybody was expecting for a big disaster in India. I'm talking about global. But we have come out of this because of the resilience of our systems, our public health system, our private health system. Everybody has contributed to this. What we want to articulate is to how we can contribute best to the overall scheme of the country's wellness. And now this wellness concept has come up so well. Even before COVID, a lot of talk, wellness centers. And this whole wellness concept, especially in the medical setting, there was no wellness component in the curriculum earlier. We all have public health programs, which is, as I appreciated, how resilient we have been during this COVID pandemic. But the practice of wellness at individual level is also very important. Today we had Dr. Sareen's oration, and he talked on the, reducing fat in liver. But, we all have double problems of malnutrition as well as obesity. How do you, talk and articulate your, individual health or prevention into it? To practice preventive health or preventive clinical prevention can be done best at the family physician's level. Whether it be program, whether it be, lifestyle changes, whether it be, prophylaxis, all these components merge into the role of the family physician in the community setting. And there have been researches, and there is a research in New England Journal of Medicine, which is called Ecology of Healthcare, which is one of the foundational research. Where do we need to put our resources into? And in 60s, it said that in a given community of 1,000, and in a given month, around 750 people will experience some kind of illness or injury. Out of this 750, only 250 will go to a physician or a doctor or seek medical care. Rest of them will be, doing self-care or home care, home remedies, or, pharmacies, local pharmacies, and which is fine. Out of this 250, people who seek care from a physician or a provider, only 9 requires hospitalization. So out of these 9, only 1 person requires to be admitted at a tertiary care teaching hospital or a medical college hospital like AIIMS or, So you see, the morbidity is 750, that comes to the physician or provider level is 250. The one who is admitted at medical college is 1 out of the 750. So what we see and trained at medical colleges is 1 person. And it is a very, fraction of, or very, small, spectrum, section of a spectrum which we actually trained our students for. Most of the patients that are admitted are, end stage or acute patients. You get, cerebral malaria, unconscious patient. You get trauma patients. You get end-stage liver failure, end-stage kidney failure, MI, strokes. All these patients come through. These are not the cases that you see of the 750 or 250 patients that are prevalent in the community. Somehow we are able to cater that, 9 or 1 in the hospital setting, because we have plenty of corporate hospitals, private providers, even government settings. Everybody things are improving, infrastructure is improving. But what about that 250 morbidity? What about that 750 morbidity that we are not thinking about?
And that is the area where we are talking about this 250 morbidity that has to be addressed. And that is the reason of the acuteness of this one morbidity at the tertiary care center. And if you go to, I was talking to AIMS students, and a few days back, and I told them कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट यहाँ के नहीं होते, कभी आप अपोजिट सफदरजंग हॉस्पिटल में चले जाइए और एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करिए, आप नहीं करा पाएंगे. आप अगर सफदरजंग के इंटर्न हैं, इफ़ यू वांट टू गेट योर पेशेंट ट्रीटेड एट एम्स, आप नहीं करा पाएंगे. इंडिया एक ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए पॉलिटिकल रिकमेंडेशंस दी जाती है लिख के. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखते हैं कि मेरे पेशेंट का अच्छा इलाज किया जाए. मतलब जहाँ पे आपकी जो आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, वो क्लिनिकल नीड्स होनी चाहिए, वहाँ पे पॉलिटिकल, ये इसका मतलब ये है कि पब्लिक हेल्थ इनसफिशिएंसी है. अगर आपको एम्स में नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, छोटी छोटी जगहों पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लोग चिट्ठी लिखवा के ले जाते हैं कि मेरा अच्छा इलाज हो जाए. अच्छा इलाज क्या, ऐसे नहीं होगा. तो जब तक ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम में रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है, तब तक हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम इनएफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है. तो वो हमें एड्रेस करना पड़ेगा, इसको एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा. इसको ऐसे कैजुअली नहीं लेना कि भाई ये तो भाई हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का रोल ही है कि इलाज कराओ. इलाज कराना एमपी काम कम थोड़ी है. उनका पॉलिसी बनाना है, एक्ट बनाना है, लॉ बनाना है, उस लॉ को कॉर्पोरेट कराना है. छोटे मोटे काम आप कराने के लिए किसी को ओपीडी का अपॉइंटमेंट देना. मेरे पास 3-4 एमपी के फ़ोन आते हैं बिहार से कि इनको इस हॉस्पिटल में दिखवा देना, इनको इस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट दिला देना. तो ये सब काम मतलब कि मुश्किल है लोगों के लिए. एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है. ये एक्सेसिबल इसलिए है कि छोटे छोटे, मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया कि हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है. मैंने कहा क्या हो गया? बहुत बेचैनी है. कितनी उम्र है? 40 साल की वुमन है. तो कहाँ पे? उसको सिवान से ले गए पटना मेडिकल कॉलेज. बोला पटना मेडिकल कॉलेज में 3 दिन से भर्ती है, कुछ राहत नहीं मिल रही है, दिल्ली ला रहे हैं. बोला ले आओ. फिर दिल्ली लाए. तो दिल्ली में लाए तो उसको देखा तो उसका केवल बीपी बढ़ा हुआ था. ना उसका सिवान में बीपी चेक हुआ, ना पटना मेडिकल कॉलेज में बीपी चेक हुआ. और उसको बीपी बढ़े होने की वजह से उसको बेचैनी होती थी. तो उसको अब साइकेट्रिक इलनेस कह लें अब, या उसको बेचैनी कह लें, या उसको रेस्टलेसनेस कह लें, विच वॉज अनएक्सप्लेन्ड एंड नॉट एड्रेस एट द पेरिफेरल लेवल. तो ये सब प्रॉब्लम दिल्ली में भी है. दिल्ली में भी आपके बहुत सारी डिस्पेंसरीज हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं. कंट्रोलमेंट बोर्ड है, दिल्ली गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम्स है, और ये सब अलग अलग काम करते हैं. मतलब पॉपुलेशन तो है, एक ही है, दिल्ली के सब सिटीजन हैं, लेकिन सबका जो आप देखेंगे कि उनका जो मैंडेट क्या है वो अलग है. जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मैंडेट वो अलग, वो प्रोग्राम चलाते हैं. मोहल्ला क्लिनिक का अलग प्रोग्राम चलाते हैं. सीजीएचएस वाले केवल सीजीएचएस को देखते हैं, ईएसआई वाले केवल उसको देखते हैं. लेकिन पॉपुलेशन एज ए होल, किसी को अगर एक्सेस टू चाहिए सिस्टम में, तो वो इन स्पाइट ऑफ ऑल पुटिंग रिसोर्सेज इट इज़ फ्रेगमेंटेड. मतलब कोई इंटर कनेक्शन, कोई इंटीग्रेशन, जहाँ पे सबसे मोस्ट रिसोर्स प्लेस है दिल्ली में, वहाँ पे भी जो छोटे हॉस्पिटल है 50 बेडेड 100 बेडेड वो खाली पड़े हैं. वहाँ पे कोई बुखार दिखाने के लिए भी जा रहे हैं. डिस्पेंसरीज में 2 बजे तक तो डॉक्टर ज़रूर होते हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है. तो ये सब सिचुएशंस क्यों हुई है? हेल्थ सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव से भी वी हैव टू सी, एंड फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स वी हैव टू एड्रेस. फैमिली मेडिसिन primarily we have understood it is not about specialty. First of all, it is about फैमिली मेडिसिन. एक चाबी है कि हम सिस्टम को हम चेक करते हैं. ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम अभी भी जो हम एडवोकेसी करते हैं, उसका हमारा कोई पर्पस नहीं है कि हमें जॉब दो, हमें जॉब नहीं चाहिए. ऑल ऑफ अस आर ऑटोनोमस, जो हम बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर डॉक्टर है, वो केवल फैमिली फिजिशियन ही हो सकता है. ये अब जाएगा कहीं एटोसोस लेके गाँव शहर कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक कहीं जाके बैठ जाएगा और इलाज करेगा. उसको कोई जॉब वॉब नहीं चाहिए. हम इसलिए आर्टिकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम वरीड है अपने कंट्री के बारे में, हम अपने कम्युनिटी के बारे में, हम अपने फ्यूचर मेडिकल स्कूल्स के बारे में, मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में कि क्या होगा. 1 लाख डॉक्टर्स बनेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा. अभी 1 लाख MBBS की सीट्स हो गई हैं, फिर 2 लाख हो जाएंगी. तो क्या उससे एड्रेस हो जाएगा? क्या ये जो डायलॉग चल रहा है, इज़ दिस जो हमारा ये जो पॉलिसी के जो डिस्कशंस हो रहे हैं, आर दे इन अलाइनमेंट विद द पब्लिक हेल्थ नीड्स ऑफ आवर कंट्री? क्या यही हम चाहते हैं कि 2050 में भी ऐसा ही होता रहे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के पहले हम लोग जब स्टूडेंट थे तो वो 2000 वाला गोल्स पढ़ते थे, पूरा नहीं हुआ. 15 वाला गोल्स पढ़ते थे, पूरा नहीं हुआ. अभी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वो भी फिर 30 में अभी लड़ाई चल रही है यूक्रेन में. तो ये तो ग्लोबल वार चलते ही रहेगा. तो इसमें हमारा तो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पा रहा ना. काम हो रहा है कि नहीं, मेन ये देखना. अगर नहीं हो रहा तो सब बेकार है. तो as long as we are aligning our articulation of family physician, most important is to train family physician. That today's context is to integrate into the MBBS curriculum, because PG is a different. We are not talking totally about PG at all today.
वी आर नॉट वरीड। लेकिन जो बेसिक फाउंडेशनल लाइसेंसिंग कोर्स है उसका पर्पस क्या है? फैमिली फिजिशियन ही बनाना है। अगर वो फैमिली फिजिशियन बनाने में उसका फैमिली मेडिसिन के फैमिली फिजिशियन का कोई एक्सपोजर ही नहीं है तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? मतलब कैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो तो नीट पीजी में जाएगा, उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट बनेगा, 10-12 साल तक लोग पढ़ाई करके उसके बाद डिस्फंक्ट हो जाते हैं। क्योंकि इवन आपने सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको त्रिपुरा गवर्नमेंट आपको 5 करोड़ के पैकेज पे ले जा रहा है, जैसे आईटी में हो रहा है। आपको अमेरिका में तो यूएसएमएल दे के स्ट्रगल करके जाना पड़ रहा है, ना ही आपको इंडिया में मेदांता हॉस्पिटल या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको किसी कैंपस इंटरव्यू के साथ ले जा रहा है कि आपको 3 लाख की भी सैलरी दिल्ली में मुश्किल है, किसी भी स्पेशलिस्ट के लिए बोल रहा हूँ, और कहीं से भी पढ़ा हो तो ये किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। आप सुपर स्पेशलिस्ट कर लें तो कम से कम पब्लिक की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो। सो दिस इज द इंटेंट ऑफ डूइंग दिस कंसल्टेशन, डेवलपिंग ए consensus that at least our medical graduate, which is a licensed physician, should be comfortable in treating common diseases in community setting, and that should address the morbidity and public health challenges of the country. This is the whole premise of this consultation. I welcome you all. Thank you very much.